सभी को राधे राधे। आप सब में विराजमान ईश्वर शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आरोग्य वेलनेस पाथ से आपकी सारथी प्रतिभा शर्मा। हमने पूरा प्रयास किया कि आपको अधिक मास में अधिक का फल देने का। कि हमारी छोटी जो सारथी जी है, आशका अग्रवाल जी, उन्होंने बहुत बहुत प्रयास किया कि आप लोगों के सामने बहुत ही सिंपल भगवत गीता के पूरे 18 पाठ आपको सुना रही हैं वो। बस हम अंतिम चरण की ओर बढ़ने ही वाले हैं। आज जो हमारा दिन है 17वां दिन, 17वें अध्याय को ध्यान से सुने और लाभ पूरा ले। आशका जी स्टार्ट कर सकती हैं आप। Namaste everyone. I'm Ashka Agarwal from Hyderabad. Today we are starting chapter 17 of the Bhagavad Gita. It is called Shraddha Trayavibhaga Yoga. In simple English, that means the yoga of the division of the threefold faith. In chapter 16, Sri Krishna Bhagwan Ji talked about two kinds of qualities in people. Good qualities like kindness, honesty, and humility, and not so good qualities like anger, greed, and pride. And he said that good qualities bring peace, and not so good qualities bring confusion. Now, in chapter 17, Sri Krishna Bhagwan Ji talks about faith. He says that every person has faith, but the kind of faith a person has depends on their nature and their qualities. Let's see what Sri Krishna Bhagwan Ji explains to Arjuna through this chapter. Before beginning the recitation, let us pray together. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। Now I will begin the recitation of chapter 17, Shraddha Trayavibhaga Yoga. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः
तस्याः स्निग्धा स्थिरारुद्या आहाराः सात्विका प्रियाः कट्वं ललवनात्युष्णा विदाहिनाः आहारा राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदाः याति यामं गतरसं ऊटिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसः प्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो न इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्पार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनं सृष्टानां मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मया तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तामसमुदारतम् दातव्यमिति यत्ताणं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्ताणं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत्ताणं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यत्ताणाम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तामसमुदारतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञातपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्ररुच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते
कर्म चैव ततर्तीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं पस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्यनो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। Now I will explain you the simple meaning of chapter 17. In this chapter, Shri Krishna Bhagwan Ji talks about faith and how different people have different kinds of faith. He connects it to the three qualities we learned about in chapter 14: Tamas, Rajas, and Sattva. He says that a person with tamasic faith, heavy and unclear, follows things without really understanding why. A person with Rajasic faith, restless and passionate, does things more for show or for getting something back. And a person who has Sattvic faith, pure and peaceful, worships God with love and sincerity. I found this interesting because I never thought about faith in this way before. I always thought faith just means believing in God. But Sri Krishna Bhagwan Ji is saying that even our faith has a quality to it. Sri Krishna Bhagwan Ji also talks about food in this chapter. He says that the kind of food we eat also reflects our nature. Tamasic food is stale or unhealthy. It makes the mind dull. Rajasic food is very spicy or heavy. It makes the mind restless. And Sattvic food is simple, fresh, and nourishing. It keeps the mind calm and clear. I found that very interesting because I never connected food with the mind before. But when I thought about it, I felt, yes, when I eat something heavy, I do feel a little lazy after. And when I eat something light and simple, I feel more fresh. And at the end of this chapter, Sri Krishna Bhagwan Ji talks about three words: Om, Tat, Sat. These three words mean the eternal truth, the truth that has always been and always will be, God Himself. I like that. Three small words, but full of so much meaning. That is what I understood from chapter 17. Thank you so much for watching and listening today. In the next video, we will begin chapter 18, Moksha Sannyasa Yoga. If you like this video, please like, share and subscribe. And click on the bell icon for future videos. Please also share this with your family and friends. Jai Shri Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद आशा अग्रवाल जी। इसका संक्षिप्त में मैं हिंदी में अनुवाद बता देती हूँ कि श्रद्धा जैसी होती है वैसा ही मनुष्य बनता है। सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को ईश्वर और अच्छे कर्म की ओर ले जाती है, जबकि राजसिक और तामसिक श्रद्धा उसे भौतिक इच्छाओं और अज्ञान की ओर ले जाती है। शुद्ध श्रद्धा सात्विक भोजन, अच्छे कर्म और निस्वार्थ दान अपनाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाए। यही हमें भगवान श्री कृष्ण जी सिखाना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे अंतिम चरण में हम मिलेंगे आपके साथ 18वें अध्याय में आशा अग्रवाल जी के साथ। सभी को राधे राधे।